Welcome to my YouTube channel Upschooling. I'm your educator Mr. GB Suar. Dear friends, in this video what we are aiming is we'll discuss three most tricky, or you can say the most difficult questions which are generally asked in the teacher recruitment interviews, public service commission, or any interview of its kind. And these questions I will discuss it in English and Hindi in this video. These questions, it gives you pain and stress. Why? Preparing, if I can be of any help to make your preparation easier or to ease out your preparation, I am going to discuss three important questions. The first question, will you guess or will I do it for you? First question is define yourself, introduce yourself, or say something about yourself. It's one of the three tricky questions. This is question number one. Two more questions are there. So during our course of discussion, I will let you know what are those two other questions. So it seems to be a very easy question, but when asked in the interview, you sit completely blank. It turns out to be most difficult and tricky. Why? Look, in a given time frame or in an interview situation, when minimum 3 or 7 senior professionals are sitting in front of you, what happens? They cannot waste their time. By then you have to be very precise. You have to be very simple in your communication. Simple and precise. So it becomes very difficult that what should I tell about myself? What should I tell? Should I tell about myself, and what should I not tell? Not tell it to them. Let's discuss in brief. आज हम वही देखेंगे, ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूं आपसे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इन दिस सर्विस. और थर्ड क्वेश्चन रहेगा व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू. थर्ड क्वेश्चन. ऐसे तीन क्वेश्चन हम आज देखेंगे. पहले तो इसको निपटाते हैं. पहले डिफाइन योरसेल्फ. व्हेन यू आर अपीयरिंग बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड, you must understand what to say and what not to say. वो डायमेंशंस होता है. एंड अगर कुछ बोलना है, to say how much, कितना बोलना है. देखिए, बोर्ड के पास आपका बायोडाटा है. योर नेम दे नो वेरी वेल ऑलरेडी. नेम तो उनको नहीं चाहिए. सो यू आर नॉट सपोज टू रिपीट योर नेम. डोंट रिपीट योर नेम. नाम को रिपीट नहीं करना है. अगर if you are not comfortable starting the conversation without uttering your name, you can say, as you know sir, my name is XYZ. अगर आप comfortable नहीं है without your name, आप ऐसे start कर सकते हैं, ठीक है. Let me tell you, in my career I have taken many interviews. Some of the candidates even say, वो तो शुरू कर देते हैं कि माई सेल्फ ऐसा करके, माई सेल्फ XYZ, एक पोजेसिव प्रोनाउन के साथ शुरू कर देते हैं, जो एकदम गलत है. माई सेल्फ XYZ नहीं बोलना है. इवन इफ दे से पेरेंट्स नेम, माई पेरेंट्स नेम, माई डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से आया है, विलेज बोल देते हैं, और अपना स्कूल का नाम भी बता देते हैं. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. ये सारे नहीं चाहिए बोर्ड को. Because you are no Buddha and from Lumbini Udyan, try to understand my point. Because the people on the interview board are not free people. They are not free people. And they are not interested to know everything you want to say. So don't discuss your date of birth, your village, your school, or your name even. But you can say the name of your district. You can say the name of your district.
यू कैन से द नेम ऑफ योर स्टेट, कौन सी स्टेट से आए हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हैं. आई एम XYZ, और आई एम फ्रॉम B डिस्ट्रिक्ट एंड O स्टेट. हम यही जगह से हैं. ठीक है. आफ्टर दिस दे आर मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड इन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका वो जानना चाहेंगे अभी. योर अचीवमेंट्स का मतलब ऐसा होता है कि यू कैन नॉट डिफाइन योर अचीवमेंट्स. मैंने देखा है कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, अपना बोलते हैं कि सर आई हैव बीन ए वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट. ये नहीं बोलना है. आई पास्ड विथ ए डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश ऑनर्स. डिस्टिंक्शन की बात भी करते हैं, ये भी नहीं चाहिए. ठीक है. डोंट से इट डज नॉट साउंड गुड. क्यों नहीं बोलना चाहिए? डज नॉट साउंड गुड. जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर और योर सब्जेक्ट फ्रॉम रेवेन्शा यूनिवर्सिटी, M.Ed from Indira Gandhi National Open University, and my doctorate degree from this or that university, or whatever university you passed from. Mention your latest two degrees or diploma, or best last two higher degrees. That is more than required. ज़्यादा नहीं बोलना है. और इसके बाद क्या बोलना है? After this you can tell your hobbies. Hobbies आप बोल सकते हैं, जैसे कि singing हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और भजन्स, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल्स आप बोल दीजिए. अगर आपका हॉबी जो भी है, प्लेइंग बोर्ड गेम्स, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं. से इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस आप भी बोल सकते हैं. मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट में लिख के बताऊंगा कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है. इफ यू हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड समवेयर, ऐसे 2-4 पॉइंट आपको बोलना है. यू मस्ट टेल दिस इन 1 or 2 sentences, ज़्यादा नहीं है. सो इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा? माई नेम इज XYZ. आई बिलोंग टू भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. आई हैव डन माई BA फ्रॉम Ravencha University, MA from Ravencha University. My hobbies are A, B and C. I have done 2 years work in this industry or in this school or in this college. I was working on this designation. In the meanwhile, I have already been selected as this into this. क्या करना है यहाँ पर exactly? आपको थोड़ा specific बनना है. You have to be specific. You have to be smart. If you want to leave any clue, you can also leave it. How to leave clues? कैसे clue छोड़ना है so that वो उस clue के ऊपर आपको सवाल पूछे. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था कि I belong to भद्रक district, which used to be undivided Balashore district before 1992. ऐसे मैंने कुछ बोल दिया. So this is the way you can navigate the interview yourself. I must say here, अगर आपको ऐसे बोलना है, कुछ क्लू छोड़ना है, you have to be careful. Careful to gather all such data in hand to satisfy the queries of the interview board. नहीं तो आपने बोल तो दिया कि I belong to Bhadrak district, which used to be the undivided Balasore district before 1992. कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन सा रिवर्स है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, व्हाट आर द फूड एंड हाउ आर द पीपल, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. इसलिए क्लू छोड़ना, अगर आप एक्सपर्ट हो, स्पीकिंग एबिलिटी अच्छा हो, तो आप क्लू छोड़ सकते हैं. ठीक है, टू नेविगेट द इंटरव्यू योरसेल्फ. ओके, तो ऐसा है, आपको ऐसा कुछ लिख के मैं दिया हूँ. माय नेम इज XYZ, आई बिलोंग टू B डिस्ट्रिक्ट ऑफ O स्टेट, आई हैव डन BA. ऐसे कुछ आप बोलेंगे डिफाइन योरसेल्फ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी ट्रिकी. व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस और आवर इंस्टीट्यूशन?
ऐसे कुछ आपको पूछ दिया, क्या बोलेंगे, व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, दोनों चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए। सो कैंडिडेट्स, मैंने देखा है इंटरव्यू बोर्ड के टेबल के ऊपर देखा है, they throw very poor answers, often peculiar answers for this particular question. They say I love teaching, I love doing social work, and this is a very good platform, they say. ऐसे कुछ बोलते हैं वो, but the interviewer thinks that maybe you are Dr. APJ Abdul Kalam or Radha Krishnan or Binoba Bhave or Gopabandhu, which you are not. ऐसे कुछ आप सवाल नहीं छोड़ना है उनके पास। So I mean to say, it does not look good in interviews when you say that I love teaching and I love doing social service and this is a platform. ऐसा कुछ नहीं बोलना है वहाँ पर। So you have to be simple. You have to be simple and you have to be down to earth for this particular question, and not to be self-boasting. Not to be self-boasting. ऐसा कुछ आप मत बोलिए लगे कि आप बहुत बड़ा चीज बात कर रहे हो आप। सो इन इंटरव्यू डोंट स्पीक फ्रॉम योर हार्ट से नहीं बोलना चाहिए। आप तो चाहते हैं कि गोपबंधु हो सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, तो डोंट स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, स्पीक फ्रॉम योर माइंड से बात करिए। When you speak from your mind, you better know what to say, what not to say. अगर आप हार्ट से बात करने शुरू हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। So the interview board may use their cognitive skills, their judgmental skills to understand what the reality is and what the pretension is. Reality and pretension, ये दोनों चीज पर आपको ध्यान देना है। So don't pretend to be a great person. That will be your weakness. अगर आप pretend करेंगे तो वही आपका weakness बन जाएगा इंटरव्यू में। What to say then? Very honest answer. You have to be honest. You have to be normal. Normal आदमी बनना है, ordinary person बनना है to answer this question. आपको ये पता है कि the job you are seeking is good for you, इसलिए तो आपने गया है वहां पर, सिलेक्शन हुआ है आपका। Why this is good? अगर आप उसका आंसर करने चले, ये जॉब क्यों आपके लिए अच्छा है, you can be, your answer can be appropriate. You can say, sir, yeah ma'am, the most attractive thing for me is that the diversity this job provides me. Diversity means, डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है कि देयर वुड बी नो मोनोटोनी, काम करने पे मजा आ जाएगा। आई मीन यू विल एंजॉय द जॉब फॉर ए लॉन्ग टाइम। और दूसरा बात है फिनेंशियल स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी। उसका मतलब ये हो सकता है कि गुड या डिसेंट सैलरी है, सैलरी का पॉइंट है। इट ऑल्सो इंक्लूड सम फ्रिंज बेनिफिट्स, मतलब गुड हाउसिंग ऑप्शंस हो, या आपका गुड मेडिकल फैसिलिटीज हो, या गुड एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सारे चीज के लिए आपने आया है यहाँ पर। यू कैन से दैट आई वांट टू कंट्रीब्यूट indirectly for the development of my nation, indirectly, not directly, because you are not into that kind of service. Your institution को सर्व करने से मैं indirectly सर्व कर दूंगा नेशन को। You can say I believe if I get some decision making power, अगर आप मुझे कुछ decision making power दे देंगे, I can give my contribution properly. इसका मतलब ऐसा मत बोलना कि don't say आई एम हंग्री फॉर पावर। हंग्री फॉर पावर अगर उनको लगा कि आपको पावर हंगर हो तो बात बिगड़ जाएगा। जस्ट से इफ सम पावर इज थर्स्ट अपॉन मी, आई वुड बी बेटर इक्विप्ड टू डू सच थिंग्स व्हिच आई थिंक आई कैन डू फॉर ए बेटर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मिशन। ऐसा कुछ आप बात करके उनको समझाना है। बिसाइड्स दिस यू कैन गिव सम इमोशनल टच टू योर आंसर ऑल्सो। कैसा इमोशनल टच आप दे सकते हैं? इमोशनल टच का मतलब मैं ये समझता हूँ
कि कैसे आप जैसे कि आपने कुछ स्टोरी बोल दिया, कुछ स्टोरी एक रियल स्टोरी होना चाहिए, वो स्टोरी रियल स्टोरी होना चाहिए. आई मीन टू से दैट रियल स्टोरी मीन्स इट्स नॉट अ कुक्ड स्टोरी, a story that you have created from your past. आपका पास्ट के साथ रिलेट करके कुछ स्टोरी आप याद कर लीजिए. जैसे कि वन वुड से कि व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, क्या हुआ इन माय स्कूल फंक्शन, एक दिन XYZ केम एज द चीफ गेस्ट, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही वाज एंजॉयिंग देयर, everyone was after him, the kind of work he did for the people, no, that's why the respect. So he was a dedicated, a committed teacher as a guest on that day, or an administrative officer on that day. I found this is what I should get in life. And because I had seen a teacher or an officer having a lot of respect, I thought I should do something like this. ऐसा कुछ आपने स्टोरी में बोलना शुरू किया. Then I discussed with my parents, my teachers, that the kind of respect they are enjoying. ऐसा कुछ आपने बताना चाहा इंटरव्यू बोर्ड में. That possible for me to enjoy in any profession or in any method. आपने पूछा अपना फ्रेंड्स को, टीचर्स को, ठीक है. And my teachers, my elders, my friends, everyone suggested me that if you are passionate to get such kind of respect, if you are passionate to do something great for the people, then the only way is to get into this kind of profession. ऐसा कुछ प्रोफेशन में आपको जाना पड़ेगा. So I came to know about this profession in my childhood, and my childhood dream has always led me to take my academic decisions in this direction only. ऐसा कुछ आप बोलिए. And later when I became an adult achiever, this emotive region, जो इमोटिव रीजन जो बात आप कर रहे हैं, दिस इमोटिव रीजन disappeared gradually and cognitive regions came in the front. You can say like this, or the best way possible, think yours. ये एक सजेशन के तौर पे मैंने आपको बोला. अच्छा, अगर ये सारे चीज को अगर आपको लेना है एक जगह, कैसे वो दिखता है, देखिए डाइवर्सिटी का बात हुआ, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का बात हुआ, ऐसे कुछ आप करके सेकेंड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, ये भी एक क्वेश्चन है. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. व्हाई यू वांट टू जॉइन देम, डिफाइन योरसेल्फ, एंड व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू. Here it sounds quite ridiculous to say. कुछ तो कैंडिडेट्स बोलते हैं, सर आई एम द बेस्ट, सर आई एम द बेस्ट, दैट्स व्हाई आप मुझे सिलेक्ट कर लो. दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट आई एम द बेस्ट, ये डज नॉट हैव एनी फूटिंग, कोई फूटिंग नहीं होता है उसमें. द प्रीमाइस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज फॉल्टी, क्वाइट फॉल्टी, या इट इज फेक, इट्स अ फेक आर्ग्यूमेंट कि आई एम द बेस्ट. आप प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं. कैसे आपको पता चल गया कि यू आर द बेस्ट? बिकॉज यू डू नॉट नो दोज 99% of the students or the candidates. So don't say anything which is not believable, because the person sitting in front of you are professionals. So क्या बोलना है आपको? आपको वहां पर modest होना है. You have to be modest. You have to be very honest. You have to be honest. So here you say, sir, ma'am, as far as I know, this particular position needs some kind of aptitude and some virtues. ऐसे जो पोजीशन के लिए आया हूं, कुछ एप्टीट्यूड, कुछ वर्च्यूज या एट्रीब्यूट्स डिमांड करता है ये. ठीक है. एट्रीब्यूट्स का मतलब जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, ऐसा कुछ है जो आपके पास है. आप कैसे बोल सकते हैं कि एज फार एज आई नो और माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई फ्रेंड्स have taught me about myself, I am of the view that I am having the values like honesty, integrity, neutrality, compassion,
dedication, ऐसे कुछ as the inherent values of my personality. And if I am given with the task of bringing this particular institution into the mainstream of development, I believe I can do that with patience and perseverance required for it. ऐसा कुछ बोलिए. Secondly, क्या बोल सकते हैं आप? Secondly, as far as my aptitude is concerned, I possess good analytical skills. I can analyze the data to understand the problems of certain area. ऐसा आप convince करिए. I can also analyze the various options available for the development. The basic reasoning skills है मेरे पास, basic data interpretation skills है, और basic mathematics skills है, the basic common sense है, which are required for decision making. I am a good decision maker, ये भी बोलिए. I make decision very quickly. Generally my decisions are comprehensive and accurate. ऐसा कन्विंस करिए आप. देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे चीज मैंने कह गया. आपको any two or three attributes के बारे में बात करना है जो which are appropriate in your case. और अंत में आप बोल सकते हैं कि the confidence that I have that I should be selected for this particular position comes from the fact or from the opinion of my parents, teachers, my friends that I possess all attributes and aptitudes which are required to be a good officer or an effective teacher, जो position के लिए आपने गया हुआ है. So I do not know, sir, am I able to convince you or not, but this is about my belief about myself. Sir, I want to insist you on selecting me. I have presented my virtues and aptitude before you. Rest you please decide. ऐसा politeness के साथ आपको बोलना चाहिए. ऐसे कुछ जो हमने बताया है, कुछ हमने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे छोड़ा है. आप देख लीजिए ये सारे चीज. ठीक है. अगर आपको यू आर कन्विंस्ड कि ये 3 क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन था डिफाइन योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या प्लीज से समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंस्टीट्यूट, और तीसरा क्वेश्चन था व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू. ये 3 क्वेश्चन का आंसर बराबर इसी ढंग से आपको अगर प्रेजेंट कर पाएंगे विथ ऑल कॉमन सेंस, तो आपको मुझे लगता है कि दैट विल बी क्वाइट साइंटिफिक टू आंसर इन सच मैनर. अगर आपको क्वेरीज है कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई यहाँ पर तो बात ख़त्म नहीं होता है. यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है कि प्लीज से समथिंग for 3 or 4 or 5 strengths and weaknesses. अगर आपको मेरे गाइडेंस चाहिए in this respect, so you can write it in the comment box so that I will continue the series with your strengths and weaknesses in the next session. Upschooling would like to thank you for the support and love you have given. Please like, comment and share and subscribe my channel. The name of the channel is Upschooling. Thank you very much.